उसने यूजर ने पासवर्ड डालना ना। हाँ जी, जो आपको बुलनॉक्स की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वो नहीं जो आपने क्रिएट किया। वो PX73। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Okay. ये
Okay. You're not. Good morning. Ji. कैसे हो? बढ़िया से और इसको आप चले गए जुड़ता सही है सबका मैंने तो ट्रेड ऑफ हां मैंने तो ट्रेड नहीं किया अच्छा हां एक सिम में गया था सिम में 200 बन गए हां उसमें क्या बाहर वाला बना मैंने बस पोस्ट कर दी पड़ी 460s. आपको बहुत ही कम चाहिए टारगेट बहुत ही कम चाहिए आपको जी $100 बन जाए मैं तो वही कह स्टॉक से किया स्टॉक से कर गया नहीं मैं कॉमर्स आपको ट्रेड करना जरूरी है All right. Good morning, everybody. Wednesday, May 28th, 9:10 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com, is in person as well as online. First thing is first, most important news for today, NVIDIA earnings this evening. So things are going to go chaotic. It could move quite big. So if you look at your earnings on your super areas, the companies with $1 trillion, so they move big. So $3.3 trillion, more than some countries. So one single corporation. So it's trading at 135 or so, give or take. But let's see what happens. They went to the Middle East. So it could go in either direction. We have no idea. So be ready for volatility tonight after 4. And so yeah, very, very risky move. Let it settle first. Right now, NVIDIA is up to 136, already $1 up. So yesterday, market did not give us a retrace at all. For the whole day yesterday, it kind of only came down a few points. When the market opened, I did short, got a couple of points and exited. But there you go. So let's take a look at areas now. Areas are what happened on Nasdaq last night. So we have a night session high, 21,537. What is night session low? 21,407. So that's the night highs and lows. So 130-point swing. Where's the price right now? It's very close to R1. Every single one, the moment areas were updated, everybody got alerts that R1 is done technically. So the price is opening very close to R1. We'll see what is night high and low for ES. High 45, low 18. So 29 minus 18 times 50. Okay. So we'll see how it goes. NVIDIA earnings, again, the biggest thing that can happen today. But we'll go with the flow in terms of the trend and everything else. So we are live on Zoom, we're live on YouTube, on private stream and Telegram. So which alerts we have already?
Jordan. Jordan is right here. Yeah. So 8:53, we got Nasdaq alert, we got ES alert, we got the Russell alert. So these three alerts went in, and so we'll worry about R2 and higher. But I'm waiting for Daniel to speak, so then I can comment. I cannot comment any earlier than him to see because of experience. So R2 is 600. We're getting very close to February range before Trump really started all this chaos. Today, you really have at 2 o'clock, we have minutes. This is going to get rough. At 2 o'clock, market could do anything because these are FOMC and these are meeting minutes. So be ready around 2 o'clock for some major movement. So just saying. 30-20 has a divergence, 15-10, but not crazy move though. Like from it went to ES went to 45 to 18. So around no more than 27 points last night. So R1 is done, waiting for R2. Most likely high to go low would be a plan, but let's see. So the first point would be around R2. Let's see what happens. But if you shorted from 540, it didn't get to 540 yet, but we're inside R1 at the moment. For both Nasdaq and both ES, we are inside. And are right now very close to the upper band of 60, and we have a bit of a divergence on 60-minute as well. Let's see what happens next. Good point, yeah.
Really stop now. Slow. Oh, lots will happen today. Wait till 2 o'clock. It will go. Even yesterday it went so high, but slow. It's okay. That's green. That's green. Yeah. Why would you think? Good. On that trend is not green. Trend not pink. It's not actually pink. Sometimes it's different. I guess that's something, right? Steve Bond. Even as a when you do red bands, right? Yeah. You have to match same color. Is the same color? Green and So has to be seen. And on the charts. Then only. Yeah. Otherwise, it's kind of stuck. Okay. So in about maybe 5 minutes, Daniel's brief will start and I'll bridge the mic in. The alert, you send us an email or you can go to the super areas. Sorry? Alert. For the Alert goes through Telegram. So you have to go on super areas, download Telegram. It's all automatic. Oh. Yeah, you have to follow. It says how to join the Telegram. Is it beneficial for us to join at this stage? Or If you are doing areas, you can, it gives you just an early indication that, hey, I'm about to hit a certain area. Heads up, that's all. Because a lot of people are just waiting and they don't know if an area can, because it will give you on the first attempt that, hey, today, right now, if it gets to rate, right now the price of R2 is, let's say, 600 to 630. What number am I looking for R2 if I was to do it today? Let me see, 600 to 630. 595. Yeah, 600 is fine because the previous highs are 558 and 562. 5958 for that? Sorry? 5958? Yeah, इसका वेट करें, but इसका वेट करें. $2 point enough or more. We can trade. Yeah, at least we'll get more than 2 points. If it gets to R2, at least 3-4 points should come out. Because there's no really other Richmond manufacturing indexes like medium impact, but yesterday's medium impact CB consumer confidence took it so high. So it was going down and then turn around. So 2 o'clock today will be fun to see. Then Donald Trump also. Hmm? Donald Trump also. Plus, that's 4 years for us. It's not just 2 o'clock. Every time you get up, one day Europeans are problem, market is down. One day he says, nothing to worry, market is so. Every day we are ready for anything.
Telegram group. That's one. Telegram group. Yes. So follow 3 steps. First step is you extract your ID. How to do it? It tells you. Second step is you have to send a WhatsApp message to that ID. So third is then you will get an invite link. So 3 steps to join. All right, Daniel is going to start the brief anytime now. So I will bridge his mics. Steps to camera. Huh? Steps to the camera. I don't know. So the camera. 6. Aku tanda was bosan. Natural gas. $20 रेट नहीं हो रहा है 30-20 रेट नहीं हो रहा है हो जाएगा डाइवर्जेंस है अभी हो जाएगा $50,329 minus 378.6. महाराज कैसे सर क्या चल Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Thank you. Microphone check. I just got in, guys. I cannot see anybody. Messages, I'll find you. Good morning. Assalamu alaikum, sir. Everybody. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posted on our web service or our training floor not as current advice is just meant to enhance your current scheme, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. It's totally responsible. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always hear your told, always back yourself, and always ready to accept those losses and do what you see, don't do what you think, and treat this market a very perfect retreat. And all the areas we have on our super.com or on our graph are not buy and sell order or buy and sell offers or buy and sell areas. These are just for information and education purposes only. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, I to go low, we are in diversion of very
strong divergence to the downside on Dow and S&P and Nasdaq. Two very strong divergence. Nasdaq and S&P, Russell 2000 and Dow are not in divergence. They are in the retracement divergence. 100% it hit our R1 area and yesterday expected high. This is our yesterday expected high where the prices are hovering around and hit our R1. Our R1 actually morning we were done around 7 to 8 o'clock. R1 was done. And our expected high for S&P 500 today is 59.85 to 6,000, and our low is 58.70 to 55. Nasdaq, our high is 21,722 to 800. Our low is 170 to 120, 170 to 100. High to go low, good strategy. And then we have news today. Richmond Manufacturing Index, and then the most important news is coming at 2 p.m. FOMC minute, and they will tell us what their future plans are, and in near future, they will cut the interest rate or not. After 2 o'clock, we have chaos, big push either up or down. But Richmond Manufacturing Index expected is less than minus 1.3. If it's less than minus 1.3, price has to go down. Even if minus 9, minus 10, minus 8, minus 7, further low is further price will go further down because green to go down and red to go up, Richmond Manufacturing Index. And then right now, opening above the range, so it's definitely night session high should be tested, and that is 45.75, and that is our R1 area. And Russell 2000, yes, break the high. Russell 2000, break the high. Dow is breaking very close on R1 and yesterday high area. And if it breaks, so all four markets will be in divergence. One more thing, guys, please, everybody who's trading gold must change your contract today to August 25. Must change your contract, otherwise. Friday, you will get the margin call, and we don't want to get the margin call. It's not good. And gold again, August 25, guys, August 25. Currencies, if you look at the currency, our British pound is down very brutally, very strong push to the downside. Break our low, even night low, that before the European session, break the low, and right now, in diversion to the upside, but still pushing down. Canadian dollar also pushing down. Canadian dollar break the low. Euro almost breaking the low of the night session low, the low we had in before Euro session. So all currencies are down, and crude oil is up. Crude oil very close to expected high for the day, and trying to hit our 40 area, 62, 40, 62, 50 area. And we might see our expected high for the day is done for our crude oil. FDAX came down. It was in diversion yesterday, went lower expected high, 100% reach lower expected high, and very nice 259 points from our yesterday high area. It came down. Crude oil, $1.63, it went down and then reversed back to $1.70, 58 cents in nighttime, and now $1.22 push to the upside, and that was a very nice push to the upside. Gold, guys, old and new contract has a huge difference, in the price. So right now, gold is at PP, but pushing down. But right now, previous 4 hours, it just keep pushing down. And we might see gold, the expected low for the day, or a minimum 3,300 area will be done. Copper is brutally going down. If you look at the copper, big push to the downside and still pushing down. Gold is going down, silver and copper definitely will see a push to the downside, and copper from R1 came to S1 area, straight at S1 area. Previous 1.5 hours. This whole push we see, it happens in 1.5 hours.
Same thing with the silver. Silver is breaking our night section low. Actually, it's already break 1%. 1% it breaks the low. Natural gas, very close to our expected high for the day, and just tanked. Natural gas just flew to the downside. 15 cents. That's a big push in 1.5 hours. Just after 9 o'clock, you see 9 o'clock, this bar open. 8 o'clock bar open, just very close to our expected high for the day, and just tanked in 1.5 hours. This push to the downside. Then Bitcoin, Bitcoin was going up, and this is a retracement. Remember, this is a retracement on the Bitcoin right now. It's below peaking. We have $2,560, $2,560 retracement to the downside. This is a retracement to the downside. Ethereum is going up. Remember, Ethereum is up, Bitcoin is down. So this is what I was telling you guys, because Ethereum has more cushion to the upside than our Bitcoin, because Bitcoin there's zero room. There's no more room because it's already at our higher high ever. But Ethereum has a huge, almost 50%. It could go up where the price is right now. S&P 500 pushing up at our one area, high to go low, further it goes up is good for us, but we'll buy movement green to go up, magenta to go down. If it goes against you, just get out from the trade. So green midband to go up, magenta midband to go down. Just do what software is telling us, do what you see, don't do what you think, and you will be on the success side. Please guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. Keep eye on 10 o'clock, Richmond Manufacturing Index. If anything less than -9, and we'll see what price will push to the downside. Anything higher, price will go further up, but expected is it will be better. Means price has to go down if numbers are good. And then 2 o'clock, we'll see a consumer minute side. Please guys take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. All of this is on your go-to meeting. You can log in. I'm just saying, it's all being broadcasted there too. All right, that's your brief. Prices inside R1 for both Nasdaq and ES. We'll see how things go today. Now, he told me the August 25 we need to do that, but I have see January. So go into tools and options and update it. So he goes. Go to Control Center, Tools, and Database Management. That's where you update the contract. Yeah, it will roll over the contracts. नहीं वो उन्होंने अभी कहा कि अपडेट कर दें क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट सब जो है ना नए चले गए. So we're all waiting for price to get to the next area or green midband to go up, red to go down. It's up to you. So R2 is what we're waiting for now. Once it goes to August, do we need to restart the? Sorry, once we No. That's it. That it will keep it. Yes, Database management. Database management.
Yes. Check mark. No, it's a GC. But ES can't. ES fine. GC is in August now. GC. So uncheck the July, June, everything. Uncheck no. Just No, just update. Okay, update. there you go. It has crossed R1. Just still showing him on time. Update. Okay, everything. Instruments, Students, okay. sorry, instrument list. Instrument list, features. Below, edit. Sorry, features with the Features below the edit. Then we can edit. features के बाद करना so gold उधर नहीं बना this वाला भी करने नहीं From the to sale. So what will you do the ATM? Or There's no ATM. You gotta manually do it. manual. So do not put the ATM. If it crosses 65 or 68, then you have to take a stop loss because the number is from 58 to 63. 8 points away. instrument is really this like GC 58. Yeah. features this is Nasdaq का हाँ जी, हाँ जी। Nasdaq का नहीं, मैं नीचे वाला ले रहा हूँ 600। वहाँ आगे एवरेज देखेंगे 600 का नंबर है मेरे पास। अगर 240 का अपर बैंड 630 पे बैठा है, बस 600 इज ओके। 30 पॉइंट्स। पहले R1 तो गुजारे। I'm just drilling. Don't make that. No trail. On the area, still no trail. On the area, no trailing. So do not put ATM. No, you can trail it. Do not put it. Do something. Manually. Manually. नहीं, R2 600 में एंटर हो रहा हूँ। ES का नहीं, अभी तो नहीं डन हुआ, अभी तो 58 पे
58 से 63 है, so anywhere 58 पे सेल कर लें, should give us few points. अब देखते हैं ये retrace कहाँ से होती है पहली दफा. So yeah, should be okay. R2 should be okay. Few points, 3-4 पॉइंट मिल जाना चाहिए. No problem. So area 2 points we understand yesterday you told me. One is the against the color. Yes, correct. Another is the do not ATM. Yeah, and don't, because you gotta manually watch where the. Any other major points? No. If someone touching again, it will be not come again. Correct. Suppose yesterday you told me it is not touching, but the 2 points this will never come again. Correct. Then you again other one. PP also part of the. PP is a different trade altogether. Okay, not for the area. Yeah, almost. Thank you. I mean, I thought that will lगा के बैठो. इसमें लगा के बैठो. check कर रहे हैं. Demo simple कर रहे हैं ना? नहीं, Simple. First time. नहीं, simple legend में करता. Oh, ले लिया. hmm. Good. Save को देखो. क्या करेगा? ये दो चल Legend में था. legend में. कोई डायवर्सन नहीं करता. Overbought हो गया ना. ये लिया कि मैं बिग बैंड को हाँ. 5 came down fast. So let's see. Closing हो गया. एक मुश्किल है. Yeah. There's 2 seats here, 1 here. ना? अब मुझे बिग बैंड तो मैं बिल्कुल नहीं करता. मैं बात करती हूँ. इतना मत किया. बहुत दिक्कत है. जिसने ट्रेन जाना है, आप तो उसी में मेल कर लेता हूँ. एक हमारा आ गया. Legend period. नहीं आप करता है मेरे रास्ता नहीं है. छह टाइप है. अभी मैंने कुछ से काट दिया.
जो हो जाते हैं ब्राउन येलो, वो आपके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेस ना लें। नहीं, आपको डिस्कनेक्ट करना है और रिकनेक्ट करना है, फिर होगा। अभी तो मेरे को किया है क्या database management नहीं है, जिसमें चल GCP ओपन किया। So the highest 564. 21,564 is the highest. अभी अपडेट नहीं है ना? Should I sell at 5,943? Correct. एक पॉइंट तो थे नहीं यार लीक से क्या होगा, ज्यादा लीक से उस पे चाक चस्पे के हाँ अभी एक ही पॉइंट सही गया अभी लेना था, कोई गल नहीं, लेकिन नहीं था, ले नहीं पाया यार। लो में चला गया। All right, first mid-band attempt coming. So mid-banding is sitting at 40. Yep. Didn't take my mid-band yet. Missed my mid-band by a tick, but I had taken top of the bar on 30-20. Okay.
2.5 is also. If you took top of the bar 30-20, give me 2 points. Not sure somebody's mid-band got picked or not, because mine on 1510 on a different account got missed. I'm personally not buying anything. I'm just staying in short because of the price divergence he has said yesterday and today. If you're buying, just go in and out quickly because 60-minute is in a divergence. So I'm not going to go from S1 long if you want, but that's our night session low almost there. Maybe I'll buy it as 2 or the bottom of the value area around 58, 82, 83. Right now it's coming towards the value area. So 59.29 is your value area top. 59.30. Yes. So value area is sitting at 59.30. I was actually done my target the moment yesterday 601 market open. I just shorted because it was at very high, and the moment it just hit 3 points, done. It came down 10, 11 points, but so स्टार्ट बहुत कहते हैं ऐसे Okay, download हो रहा है। नहीं, इधर में download। अभी चल रहा है। एटीन तक तो जा सकता है नाइट सेशन लो लेट्स सी Yeah, value area worked it to exact dot and bounced back up. The value area gave us आपने लिया? Good. Top point value area से आ गए. So value area is done on ES. And I think our alert came for Russell now. The Russell is hitting on. I'll be right back. I just got confirmed.
मिडमैन समझ नहीं आया हाँ मिडमैन समझ में नहीं आया बिगमैन नहीं समझ में आया तो देता है बहुत छोटा प्रॉफिट देता है लॉस देता है बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस देता है हाँ बहुत ज़्यादा लॉस मैं विनर सेविंग की परसेंटेज नहीं फेल मिडमैन सेविंग की परसेंटेज में फेल नीचे आता है ना पर नीचे से Because I think it will be considered. तो नहीं आ रहा है ना मैं इसको क्लोज करके रखता हूँ एक बार नहीं लॉस हो गया अभी $90 लॉस हुआ नीचे जाते हुए अब तो लगेंगे 3-4 अकाउंट थे Well, now you see this line. Do you know where it was? इसलिए तो आराम से करूँगा छोटा छोटा प्रॉफिट होता बड़ा बड़ा लगेगा हाँ Here, the light. So you see this? Passing over. इज्जत ना जाता लॉस नहीं है A bright clutch. I should put buy auto. You think that's true? You don't know, it's not 100%. There's no area. What? Did you watch on the video? No, I have one. I watched full video. There's one more in the bottom. Yeah. There's the like that too. I watched it. I was. अब मैं 3 इयर्स में करता मैं अभी इसमें ही कर रहा हूँ अब मैं साइन अप कर रहा हूँ टेलीग्राम पर तो नोटिफिकेशन आएगा ना फिर से ऐड हो जाएगा Another mid band gave you 2 points. आसानी से 2 पॉइंट आ जाते हैं जी इतना मुश्किल नहीं है टॉप ऑफ द बार gave you 2 points. मसला 2 पॉइंट का नहीं है मसला 200 पॉइंट का it's very easy. I think finally the yesterday's retrace is coming. जो कल ड्यू थी थोड़ी आई 2-3 पॉइंट की लेकिन कैसे मैं अपडेट करूँ बस ये क्लिक करें ना रोल ओवर पे रोल ओवर बस नहीं ये सामने रोल ओवर लिखा होगा थैंक यू रोल अप फीचर in update. Okay, so in the video. Yeah. What's it? So how is the news? Somebody asked. How's news? Richmond at 10 o'clock it was -9. So it's in negative. So 2 o'clock, if you're done, keep your money. These are thieves. They will take you. Vultures like Wolf of Wall Street. That's why it's called this a wolf industry is if you have a pack of wolves, 6 people,
6 wolves, one dies, all 5 will eat them. So that's how it's called Wolf of Wall Street. This whole industry is brutal. The bigger will eat the smaller one. And so if you have taken $200, $100, $1,000, run away. They will, and find an opportunity. So you want to not be in the caught of because that's trillions of dollars being fought. By the way, your funded accounts make zero impact on the market. They're not even real accounts. You get money that's real, but unless you have a GFF or AMP or per dia live, any trades you put in does not go through the real market. But the money you make is real. So, but the price that is moving up and down is for the real contracts worldwide. People are buying and selling, right? So at 2 o'clock, when you will see market go crazy, and if anybody wants to hedge, somebody asked me if I want to hedge. When hedge means one long, one short, and you can hedge which day? Give me a second. You can hedge on June 4th at 8:15. You can hedge Friday, June 6th. And then June we have lots, and then interest rate on June 18. So many opportunity in June to hedge in Apex. Look, since it's not going towards R2, what's my plan for Nasdaq? S2 is okay. S2 looks reasonable from this point on. Not this Sir, I'm skipping Nasdaq S1. sir, S1 Nasdaq ਦਾ ਤੁਸੀਂ lower limit consider ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं तो नहीं जा रहा, आप चले जाएं। मैं तो क्योंकि उन्होंने कल से कहा हुआ स्टे इन शॉर्ट, और 1000 पॉइंट देखें, 937 पॉइंट ऊपर आई है। 240 के चार्ट पे देखें 837 पॉइंट की पुश आई है। तो 837 का 30% भी आ गया ना, तो 250 पॉइंट यहाँ से गिरनी चाहिए। सो 564 minus 250, so it will land into around 314 below S1. So why not go S2? So if the swing is 837, the retrace is 30%. So what number is falling into? 314. So that's why when I look at the swing of because कहाँ से चल रही है ये Nasdaq 20,730 से, और चली ऊपर गई है 21,564, एक ही सिंगल स्विंग गई है। So 837, let's say 33% even is the Fibonacci retracement. That's 275 points. So 564 minus 276, 288. Yep. So S2, Nasdaq S2. You can take it. Maybe it'll give you 10 points, but when I'm doing longer points, 10, 20, 30, 40 points, S2 would be a better support. ES may not. Give me 1 second. Let's now do, if it falls 473 minus 270, it's 200 points. 200 divided by, let's say, 5. 40 points ES2 has to fall from here. So that'll put it right, yeah, near, very close to S2. But I think first, ES, you have so many levels first. You have S1, you have night session, which is falling there. You have a 60-minute pivot there. Then you have the 60-minute mid-band there. So ES has a lot of things to do before it gets to S2. Maybe a few points in every reversal, but अभी तो हम देख रहे हैं, अभी तो ये वाला मिड बैंड हो रहा है, 23 पॉइंट की स्विंग आई है। ये मैजिक बैंड का मिड बैंड खड़ा हुआ है 240 चार्ट में S2 में, मैजिक का मिड। तो
Let's see, right now the mid-band of 1510 is being tested. कहाँ तक है ये जी, ये 21,000 मिड, जो ऊपर की दो रेड लाइनें और उसके एक डैश लाइन जा रही है S2 के अंदर से. Around you, if you look at the 240 chart on S2, by the way, that mid-band worked, gave you 2 points. एक कर्व लाइन जा रही है आपके लिए. Can you comment on what divergent lines are giving? Yeah. So that means that the price trying to main change. Price went down, strength did not go down, but still that divergence failed and price hit mid-band and it's still coming down. So we're almost very close to S1. Not yet. We still got 10 points to go. Yes. Yes, तो अभी दूर है S1. नहीं, ये डाइवर्जेंस आई थी, ये 1510 के चार्ट पे एक वाइट लाइन आई है. Yeah, right here. So this white line represents that my trend may change. So that mid-band is 50-50 now. You take that mid-band, could change color. That line is telling you in advance that was successful. it was successful. So in this case, divergence failed. So then what it means is that it reaffirms that. No, that's it. So when you see this line, you have to reevaluate, do I want to take this mid-band or not? That's all. Now you look at 1, 2, 3 divergence here. So it's trying to really not go down anymore. So anytime this color should change to green. Should. So right now it's in trying to, the moment, if it got inside value area and it penetrated that yellow line, then we are heading down for sure, definitely. But trying to, it has to get inside that 29 number. तो जाना जीवन है ये तो लेकिन थोड़ी करते हैं गोल्ड नहीं गोल्ड का बोल रहे गोल्ड का That 29 number, we consider it as support. Right? Support. It was a support. बात की करना पड़ेगा Did you take it? You can take it now. Yeah. Which is around 4.50. When it goes there, when it has 0.50, it should be around $20. No. 27, around 27. No. When it moves to 0.30, Let's go. Sir, 30-20 पे yellow line क्या है? Yellow line? Let me double check. ये value area 30-20 का है. But we ignore it. You can ignore it.
Admit that? I don't take any action and what? ऑयल में करती है ऑयल में करती है हो गया well, इलीगल डाटा तुमने ईमेल सारी बनाई थी जब कॉस्ट हाँ जब सारी ईमेल बनाई थी तो ईमेल कौन से ईमेल को सप्लाई दिया ये तो नहीं मारी थी Another mid-band was okay. So how many mid-bands coming down? 1, 2, 3, 4 mid-bands coming down were okay. All right, let's see if it gets inside the value area now. It is inside the value area. Could you do a top of the bar trade here? Or? Yeah, but you missed 3, 4 on top of the bars. Now it's coming the ratio. 30-20 needs a retrace anytime. So like when it was starting to go down, I think 5 I counted. So you can still do top of the bar, but you know the probability is starting to go to less and less and less. Because 30-20 has come down 27 points. So intertrade profit, Uh-huh. assigned on the way. Yes. वो trading नहीं ट्रेडोवेट में साइन कर दिया उधर पेंडिंग तो नहीं लिखा रहा अभी पेंडिंग से जब एक्टिव होगा फिर चलेगा अभी तो 90 मिनट लग जाते हैं बाइंग से लेके तो हाँ जी फॉरेन इंस्टेंट नहीं है Look, another mid-band came and I'm looking at 1 point, 2 points are there. So if you sold at 59.30, give you नहीं मुझे MES में दिखा रहा है मैं ES में शायद आपका थोड़ा सा नहीं टच ऊपर जाना है
So here. See? You see this? Over here? Same down. The same down. Look, bid back in the 30, right? It was at 30. So now if value area becomes a resistance and doesn't break back out, then it will start to fill the value area. And that's the video number 5, full explanation on super areas on how value areas work. Sir, Mhm. the one that we value area is on the gap, but what is it? What are the trends there? Inside. मैं डावला हूँ ही नहीं हाँ उनसे पूछ लें क्योंकि मैं नैस्डैक और ईएस हूँ गोल्ड भी नहीं करता क्योंकि जाओ की जो है ना हाँ, ठीक है नो प्रॉब्लम यस बॉस इनसाइड दैट्स ऑल है अभी नहीं अभी 30-20 को थोड़ा रिट्रेस लेने दें वो देखें 6 मिड बाउंड तो पास हो गए हैं नीचे आते हुए राइट तो What's the second? ठीक समय मैं ना फोकस एक मार्केट में करता हूँ वरना ना बंदा उधर से भी जाता है उधर नो प्रॉब्लम जी टेक केयर जी प्राइमरली नैस्डैक देन ये देखें आपको जी अलर्ट आ गया S1 का टक 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 के S1 की तरफ जा रही है बी रेडी It's your call. I'm not buying. Personally, I'm not buying. वहां से 2 पॉइंट बाउंस दे पॉसिबल है क्योंकि आपका नंबर आ रहा है नाइट सेशन S1 PP सारे करीब हैं I just paying attention to what he said high to go low so staying in short so S1 would be a buy zone right yes it could bounce there and bounce back up maybe 50 points but I'm not comfortable personally buying yes for maybe 2 points 3 points is okay so S2 for me if I was to buy I'll go ahead so I'm letting go this opportunity no it's okay for S1 नहीं अब मैं नहीं ले रहा सर देखें आपको अलर्ट आ गया आपको सब है कुछ डिसीजन आपने खुद भी तो रिस्क और रिवार्ड के लेने हैं ना कि आपने मैंने आपको सारी चीजें एनालाइज करके दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा आपने ले लिया वो S1 ब्रेक हो गई S2 पे चली गई तो पर्सनली मैं नहीं ले रहा क्योंकि प्रेशर डाउन है मार्केट मेरे लॉजिक क्या है क्यों नहीं मैं S1 ले रहा मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट गई है 2 दिनों में इसको रिट्रेस चाहिए अब वो रिट्रेस आ रही है ठीक है S1 पे लगे 2-3 पॉइंट दे आपने खुश लेकिन अगर S1 स्लिप हो गई तो उसने जाना बड़ी तेजी से नीचे रहे तो क्योंकि अगर जिनके पास कैश है वो एनवीडिया के लिए भी तो तैयार हो रहे हैं ना शाम को उन्होंने बाय करना है अगर आपके पास $50,000 है इधर फंसे हुए हैं आपने प्रॉफिट भी तो लेना है तो अब सेलिंग हो रही है कि शाम के 2 बजे क्या होना है और फिर शाम के 6 बजे क्या होना है सो जो मार्केट का कंसेंसस है ना कि भाई कुछ भी ना रखो कहीं भी चला जाएगा
So they're all dumping right now. This is all dump happening. कि भाई बेचो बेचो. अब वो बेच रहे हैं तो price गिर रही है. Right? So, and coming down, it has fallen from 52 to 23 in a matter of what? 1 hour. 52 minus 23. 30 point गिर चुकी है. और अभी भी और divergence पर एक और divergence लगाई वही वाली चीज. See here again, that line tells you if I sit on this midband, I could potentially hit my stop loss. And look at the background and color has changed, right? So that line just gives you an alert. Do you want to take that midband? Do you want to not take that midband, right? So if you took that midband, it would hit your stop loss, right? So that's all that line is telling you. But I know. लेकिन देखिए पिछली 3 दफा वो लाइन फेल हुई है ना, तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि The divergence on 50 and it tells you don't take the midband. but there's divergence on 20. Correct. Could have taken that. Yes, no, divergence they could take away. But on the same token, on for scalping, हाँ जी. नहीं देखिए मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है, यहाँ से सेल किया है. मैं अभी -1 पॉइंट में हूँ, मैंने वैल्यू एरिया से सेल किया हुआ है. Because as a resistance. That was top of the bar. That was value area. Let's see. टेलीग्राम नहीं हो रहा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा लैपटॉप पे. लैपटॉप में रजिस्टर करना फोन पे नहीं हो रहा है. डाउनलोड कर लिया नहीं हो रहा है. ऐप डाउनलोड करो. इससे नहीं हो रहा है. मतलब टेलीग्राम लिखना पड़ेगा. तो लिख के करना पड़ेगा. I think it's not working because the internet. Photography, you were कौन सा वाला ये है? thinking scalping. This one. I was asking. So I took 3 points from this top of the bar. Right here, I shorted right here. So I look how, and I'm up $212. Price came, I hit my sell limit here, and that was value area, that was top of the bar, and I'm done. Now I see 175, but it's okay. I'll close the trade. So 3 points. So you took 1 point, I took 3 points. For scalping, you have to really. So I saw divergence, I skipped this, but I went top of the. First it went against me, 2 points. Yeah. Then it went with me. Every trade, there's a risk or there's a reward. Just know, hey, what's my maximum risk could happen? So my reasoning to take that trade was price is going up. I know my value area is 30. If it got inside, it will act like a resistance. So I sold right here, went a couple of points against me, and then gave me 3 points in this bar, top of the bar, right here. And you placed that trade because you saw a change in the color. No, I didn't. I just top of the bar. And the price of top of the bar was falling inside my value area resistance. That's all. I know it's so many analysis are happening, but I'm paying attention to area, value area, top of the bar, really 2 or 3.
But if you just see the risk from this point, this is all has happened already. 1 mid-band, 2 mid-band, 3 mid-bands, 4 mid-band, fifth one failed. So these were your opportunity to sell right here, sell right here, sell right here, right here. I wouldn't have sold here. Even I wouldn't have sold right here too, because this is a line telling me, this is a line saying, in this case, line came, still passed. In this case, line failed, right? So either divergence will fail or mid-band will fail. And when both are conflicting. And 30-20 top of the bar, how many I saw? I saw one right here that happened right now. And there was one earlier right here. This point right here. So at 10:07, we had a top of the bar. And right here, that was second top of the bar. I didn't do that. I haven't closed that. I was like, this is that makes sense. I believe. I think it's Masuk pun karo. Apps to जैसे अपन का ऐप से मन करना है. Okay, let me try to give you a full sell stop. Next bar. What do you do? It's just showing contracts of Telegram. Breakout trade. Fit and I'm entering as a sell. This is called the breakout trade. एक टिक नीचे तो आपका ब्रेकआउट पूरा हो जाएगा ना. तो ये रिजेक्शन में कंफर्म. हाँ, ये अगर यहाँ से मुझे पिक कर लेगा सेल में ले जाएगा. I just put down anything wrong. There's one of the satellite. This part, next part. Yeah, do your put a SAAS on there. वो कौन भर तो मेरे साथ कौन भर संकल चैट के लिए बोल रहा है. ओ ऐसे. Just tell me next bar. So it's right now it's hovering. So when it starts ticking and you see something, just like एक काउंटर अलाउ कर रहा हूँ. हाँ? कितने साल अलाउ कर रहे हैं? एक घंटा लग गया. It's okay. So this trade is called 30-20 rejection wick breakout trade. If I see this rejection wick, I'm waiting for price to get to the next candle. So I've placed my sell. So this is called the sell stop. It's not a sell limit, like sell, because I have to sell. Like, look, it picked me up. Let's see how many points it gives you. Almost 2 ticks it gave me. So I want it to come down. And how many ticks it gave you? I think it gave me 2 ticks दिए हैं अभी. So let's see. Because if you see a rejection wick, you miss top of the bar. You can always talk. लेकिन ये scalping इतने छोटे point हैं because sometimes look, it's going against me. So sometimes it just continues going, but sometimes it goes against you. 1 tick, 2, 3 ticks it gave me, and then reversed. This breakout was 70, 20, actually 1 point. Sorry,
23.75, 22.75, 1 point. How many points? Still 1 point? Yep, 1 point got out of it. All right, we're heading into S1 shortly. So. Now we're too close to the top. When you wait for the reversal, just get ready to hit buyouts. So night session is almost here. And area is here. Nasdaq is very far from S1. So our area begins at what number? I think 10, 9, 20.
It will be back or not. 14 to 19 area begins. Playing on the I'm playing on the S1, right? Don't know. देखली पूरी हाँ? फिफ्टी देखली पूरी क्या? फिफ्टी पूरी देखली वैल्यू है देखा? क्या ले रहे ठीक है दोबारा देख इसमें लिख दिया था। वैल्यू दिया नीड टू रीड। नीड टू रीड। नहीं क्या था? लेकिन नहीं Missed it by what? One tick? Oh, that's scary. So you're minus right now. Exactly from my take off. This is guaranteed. One, just keep riding, just keep going. कैसे करिएगा कैसे नहीं पता बस बस Yes, yeah. वैसी है दुनिया। मतलब चले जाएगा By your chart, the area chart, you have to keep an eye on it. Or look at the thing. You don't have this. All you gotta do is आया था ना? Now it's the only choice. It's gonna go to gray. It's just look at your other indicators and tell you that's going. These are all up. You can see this is transitioning to the high, right? And it's going to Again, top of the war, respected.
Look on the gray side. Look on the gray side. Gray. No, it's not gray. Look where you see the value. No, right click. Hold on. It has to be above the price. Still, it has to be below. Yeah, right click. No. No. You have 15 minutes to check the person. There's a big map. Russell is heading into our S2 now. Yeah, okay. Yeah, it'll go down. Do it. So then we just like just close the view. Just wait. The upside's gonna be somebody who's the next week. So yeah, yeah, get with me.
Hello, doctor. Telegram we see. We would like to use the Telegram. It is something data saying that it's possible. Hello. Telegram ID. IT वैसे में Telegram ID किसने IT कैसे करना पड़ेगा और तो करते हैं किसको भेजना पड़ेगा वो WhatsApp के नंबर से उसका इसका वास्तव में आईडी अशोक जासू राइट वो तो नंबर दे देना वो 5 लोग जो पढ़ते हैं 8 लोग जो पढ़ते हैं WhatsApp पे नंबर That's why if it was like here, I'd say yeah, go all day. roughly Because if it's here, इसको एक I try to हाँ, bounce ये it वाला because it's so close to this. So that's why I'm saying. हाँ ये वाला So here's the picture of one or two candles away from it just bouncing back. मेरा पॉइंट आ गया Otherwise, तो पॉजिटिव हो गया अभी मैं क्लोज करता हूँ I started drinking Fridays and I just did probably 4 or 5 drinks. I know I'm not 4 पॉइंट दे दो मैं 2 पॉइंट ले लूँगा हाँ 2% ले इसमें क्या करना है क्या लिखूँगा माय अकाउंट नहीं आप Telegram ID नहीं होगी टेलीग्राम आई so maybe I should that's what I did. बिजली Telegram ID हाँ Telegram ऐप से ID बिजली वहाँ पे ओके इसमें हाँ Telegram क्या नहीं होगा ID कौन सा आईडी है कौन सा आईडी है Telegram से नहीं Telegram ये तो टेलीग्राम है Telegram टेलीग्राम है ये तो टेलीग्राम है All right. This time it got inside our S1 Telegram के from 1850. से चैट करें चारों तुम करो ये चारों तुम करो हाँ चैट 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 वो मैसेज है हाँ ऐसे आप कैसे लिखेंगे पेस्ट कर दिया नहीं न्यू कॉन्टैक्ट कर देता हूँ टेलीग्राम वाला को नहीं आपके पास लॉगिन कर टेलीग्राम वाला मुझे आएगा टेलीग्राम वाले आपको भेज कितना है मेरा क्वेश्चन नहीं मेरा तो कंप्यूटर पे आया था मैं कोई बताऊँ कल कोर्स करूँगा नहीं करूँगा ये भेजेगा इसे कैसे भेजिए आईडी भेजेगा वो यूजिंग फुटबॉल ओह भेजा क्यों देखता हूँ Close it straight instantly. इसमें भेजा सर टेलीग्राम की ऐप में होगा कैसे कुछ नहीं है हेलो कॉन्टैक्ट सर्च करो You never इसका किया वो ये तो आप जैसे इससे करें इसमें ओपन करें इसमें आप डाउनलोड किया सेटिंग में आऊँ सेटिंग में आने के लिए बोलिए see how I did. वो बैठ सको So for respected S1 for 1 point, like went to 19 and then वहीं खड़ा हुआ है उसी बात में. That's 1 point it was. You can do trades, they'll probably be 1 or 2 seconds. Yes, sir. ऐसे वो फॉलो करके आप और मैंने वो देखा ना $15 का बिल दिया ना उसने हाँ ठीक है मुझे एनी डेस्क नहीं मैं करा था ठीक है रूल आपके ये हैं कि 30 दिन है 3000 बनाना है एजेंट में था कितना $3 लेजेंड $50 का उसमें बनाना है 1500 इसमें ज़्यादा बनाना हाँ Right now, no. I'm not going to do enough. You can do it. Get in now. see you on Monday no problem.
you also have a funded account, so it's like you have all the linked at the same time. So you gotta wait. terus follow ke step 0 और info पर क्लिक करेंगे तो आपको दे I देगा don't trust it. I'm telling you, I don't do this. If you want to do it, you can try it. Personally, I 21,000. just don't think it's a good idea. I've never seen, in my experience, I've never seen it go past this. And now it's going. I thought it was like 11. What's this FOMC meeting? That's at 2. So it's at 11 a.m. So that's what get up. And then the next time you should get in, it goes till 2 o'clock. So it's okay. No, there's only enough. That's fine. Hey, Anthony, what's up? What time is your co-op? You sure? We're, what time? We're in the. Oh, what's it called? Read. Anthony, poor guy's stranded. He has to go to his co-op and that was He's supposed to drive. No, I wasn't supposed to. He has to chase me. S1 में फंस गए. Yeah. No reach. Hey, are you? Can you do me a serious favor? Okay. It's my friend Anthony. You know my neighbor.
Because we didn't know yet there was uncertainty. threshold कितने देते हैं? 2,500. Any testing it? One 363 891 578. Accept. On the bottom. All right, area did get respected for some points. It's time to get out. Said it's lucky. No, there's a TV, right? When it goes down to a TV, you can't go out. Okay, now when you see it coming. Huh? Then you see some profit. S1 got respected fully for yes.
I think it's that meeting that's affecting it. ये फॉर्म भर दे मैं पहले आपको कोड डाल दूं सुपर एरियाज $15 अब ये फॉर्म भर दे नहीं ईमेल लिख यूजर नेम का नाम रखें अकाउंट का नाम रखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद कंपनी लिखा हुआ है ये कंपनी छोड़ दे When it comes to no zone, we can start right. We'll send them right. Since this is since the blue button is 5.9 when the flows can plus 7 we can sell right from where from the midnight yeah one secret
3020 is in divergence after touching midband, going down. Bottom area work too. I made one set. Yes, no. Yes. Day traders 90%. लग गई सेल अभी आई वो असल में 37 का मुझे सिर्फ वो निंजा की वजह से बादर होता है क्वांट टावर में ना एक दो दफा मेरे ऑर्डर्स Opposite लग गया था ना प्रमोशन एक्सटेंडेड 90%. वाओ मैंने ऐसा नहीं किया so I put a trade I closed it opposite लगी lost a couple of PAs on that. इसकी रिन्यूअल भी 15 ही है मीनिंग कि अगर ये अकाउंट डेड हो गया या नहीं हाँ मीनिंग कि अगर रिन्यू हो गया तो 15 में ही है वो जो लेकिन में जो ये इसको कैंसिल करना है उसको कैंसिल करना पड़ता है कैंसिल करना पड़ता है हाँ वरना खुद ही रिन्यू हो जाएगा लेकिन रिन्यूअल की कॉस्ट सेम है 15 ही है oh I want to do this हो गया जी डन तो ये 50,000 को लेके जाना है 53,000 3 है आपके पास 1 मंथ है डन हो गया हाँ हाँ तो जाके कैंसिल उनकी वेबसाइट पे करना है लेजेंड की तरह है बिल्कुल सेम
वो सेम भी देते हैं सेम भी देते हैं, बिल्कुल। इनका जो सिम है वो तो और जो आपका अपना है वो लेजेंड ने जो दिया था वो वो एग्जैक्टली सेम। need some assistance to start. So मेरे पास ट्रेडर निंजा ट्रेडर का सिर्फ सिमुलेशन में चल रहा है, so I cannot put stop loss on there. यू कैन, आपने वीडियो देखनी है नंबर 1, उसमें सारा एक्सप्लेन होता है, वो आज आप देख लीजिएगा। सुपर एरियाज में पढ़िए, या हाउ टू पुट इन स्टॉप लॉस, टीपी, एवरीथिंग। Should I start with the funded account yet? हाँ ये अभी तो आपका डे नंबर 2 है, अभी तो आपको उसके एटलीस्ट 1 वीक, एटलीस्ट 1। इसमें अभी हमने ऑन किया है, डू नॉट सिम आती है नाम भी आ रहा है ना, 2 है ना। जब उसको ड्रॉप डाउन करें, आपका जो नाम वाला है वो आपका अपना अकाउंट है, लिखा हुआ है ना। इसको डिस्कनेक्ट कर दूं? नहीं नहीं, आप कनेक्टेड हैं, आप अपने ड्रॉप डाउन में देखेंगे, सिम अकाउंट्स पे जाए ना। नहीं नहीं नहीं, बुलनॉक्स कनेक्टेड है अभी। या हाँ तो ऑलरेडी आप कनेक्टेड है ना। सिम में आती मैं है। बुलनॉक्स रिदमिक, Right click, refresh. आपने डिस्कनेक्ट करी है दोबारा। मैंने वो नो कर दिया था। सिलेक्ट It's okay, man, it's okay. देखिए, Refresh. नहीं नहीं, नो का तो मसला नहीं है, should show up because that's done, connected. See? No. We took a long trade. I'm about to take it. यहाँ पर आपका नाम लिखाना चाहिए। You don't watch the class you want. Just take it. Don't watch the class. एक दफा निंजा खोलिए, निंजा। Sometimes you starting my home. See? He's running. Yeah, that's right.
तो अगर आप सुपर एरियाज में लॉग इन करेंगे ना तो नीचे वीडियो है बिगिनर्स गाइड टू निंजा सुपर एरियाज में हाँ that will tell you it's about 2 hours open ninja buy sell stop all it covered full 2 hours इसके बाद अगर दिक्कत आए then I will teach you step by step and then at the bottom it gets advanced how to put a stop loss how to calculate वो so each topic is broken into पहला स्टेप है कि आपको निंजा ऑपरेट करना आ जाए कि आगे हमने पहले ये वो जो है ना लेजेंड का जो था वो उसने खुला था ओके ओके नहीं ट्रेडोबेट में रिदमिक में वो जो मैंने ऐप डाउनलोड किया ना उसमें चेक करना अपना बैलेंस हाँ इसको बुक मार्क कर लें वो ऊपर टॉप राइट पे बुक मार्क लिखा होता है उसको जो स्टार बना होता है ना उसमें लेकिन इधर पे ये कौन सा है नहीं बस लॉग इन वाला पेज रिदमिक्स के हैं रिदमिक्स को बुक मार्क है ना नहीं रिदमिक का बुक मार्क नहीं है उसकी ऐप है ये वेबसाइट पे नहीं खुलता वो आप आर्ट ट्रेडर की ऐप खोलेंगे उसमें बुलनॉक्स दिखता है हैं नहीं ऐप नहीं है सारा वेब बेस्ड वेटिंग फॉर S2 जी S1 तो डन हो गया एंड अभी तो S1 Nasdaq का तो बहुत दूर पड़ा I think it's going to be very evening is going to be very aggressive. Oh, very 2 p.m. FOMC meeting and Nvidia. I want Nvidia to go to $90 so we can buy. I missed that boat last time. A lot of guys bought Nvidia, Apple, Amazon, Google. So what is the right price to sell down? Sell it or above 160. So if I was to, because right now it's 135, I don't know which way it's gonna tilt now. Predictions are they are going to do some crazy profit. Yes. So it could go literally Middle East and everything. And yes, you are 100% right. At one point it's going to shoot and then it's going to fall. Even those people who bought at 90 and got out at 130, like it's my RRS TFSA does not get unlocked until June 2nd. So I'm missing this. It says pending until June 2nd. A big chunk of it is going towards Nvidia. So let's see. Because it's based on price to earning ratio. If I look between all 8, Nvidia still has the best. So in terms of I'm holding Nvidia from last 4 years. oh, very nice. No, I am mostly short term. Go in, get out, get it done. That's the way. Yes. Good thing about trading is you can still
hold that for long, like, okay, we know. Yes, yes. It just like price is going to be 135, 140 range for long term. Correct. But it just for today, it's going to shoot up and Surprising, Google earning to ratio is still okay to under 19. So I regret I have a lot of Solanas. Solana, November it went up to 370. okay. Now it's trading at 240. Wow. I only have Ethereum, 2 Ethereum. That's it, nothing else. Everything I get in, took XRP at 68 cents, sold it at 118. So, that's the way because when you're doing futures, you're in and out so quick, you don't want to hold nothing, right? Because you're in, you take 2 points, get out. Right? Doji's giving good earning. So, Doji, like I flipped 3 times, so yeah, yeah. the only reason I'm holding Ethereum because he has mentioned the gap, like from the highest point to the lowest compared to Bitcoin. So So is it actually इसमें जाने कैंसिल करना या वगैरह हाँ वो लिखा है लॉगिन हाँ आपके डैशबोर्ड में वो देखिए सामने लिखा है कैंसिल वो लेफ्ट पे नीचे कैंसिल नजर आ रहा है मुझे ये देखिए सामने कैंसिल लिखा हुआ है वो नीचे अकाउंट साइज अकाउंट नंबर 001 के आगे कैंसिल लिखा हुआ है हाँ one. सही ठीक हो जाएगा अभी तो बस शुरू करें ना अपन लेकिन वो शो तो करता है कि कितने ये कैंसिल लिखा नहीं ये देखिए कैंसिल तो इसको कैंसिल करेंगे तो अकाउंट कैंसिल हो जाएगा फिर अकाउंट साइन अप लिखा हुआ है वो ऊपर अकाउंट साइन अप शो करना है ना उसमें पूरा साइन तो यहाँ से नया साइन अप हाँ जी चल ओ चलो करता 5 माइक्रो हाँ रीजनेबल 5 पॉइंट्स कर रहे हैं ना दैट गुड है लेकिन अब एक फर्क पड़ता है एरिया क्या है मैं आपको एरिया बताता हूँ कि आज का एरिया ES का S2 का है मैं आपको ये खुल जाए शीट लेट्स से 90 to 95 है अगर आप 95 पे लगाएंगे तो 5 पॉइंट नहीं लगेगा आपको 10 पॉइंट का लॉस लेना है क्योंकि आपको 90 से आगे जाना है ना कि अगर 90 से गिरती चली गई देखिए वो इसलिए वो फिक्स्ड ATM नहीं होती जनरली इस तरह होता है कि आपको मैं ये कह रहा था वीडियो में भी कि आप कहते हैं कि एरिया कितना है 95 से 90 हाँ आपने लिया 95 और एग्जिट कर गया 90 पे तो वो कई दफ़ा स्टॉप लॉस लेके निकल गया तो अब आप 90 से भी 5 पॉइंट और नीचे रखेंगे ना तो वहाँ स्टॉप लॉस 10 का बनेगा 10 पॉइंट तो वो वेरिएबल हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि गैप कितना है आप एंटर करें 90 से यस 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लें 89 से आपका बनेगा सॉरी 91 से 6 बन जाएगा तो उसको वेरिएशन चलती है हाँ नीचे से इसने पिक किया था हाँ मैंने सेल पे लगाया था तो ऑर्डर पिक हो गया यस पर आते हैं तो ऊपर की लिमिट पे टच कर हाँ तो आपने 2 हाँ ऐसे ही है क्योंकि आपने स्टॉप लॉस उसको फ्लेक्सिबल रखना है कि आप कहें कि जी नैस्डैक है अब मैं वेट कर रहा हूँ नैस्डैक का लेट्स से 1270 पर्सनली 2-3 माइक्रो से मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे अगर एवरेज करनी पड़ी तो दूर जाके करेंगे लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना ही है तो 240 से नीचे 30 पॉइंट लगाएं कि अगर 21,200 पे लगा दें कि अगर आपने 70 पे एंटर किया तो वहाँ फिक्स 40 पॉइंट का स्टॉप then you can do it yes if the range is narrow then you gotta cover के वो अगली रेंज से जाके अब ये देखें ना ये रेंज है आपकी right here is the range अब ये नैस्डैक की रेंज है right here S2 ले जाऊं
ये नैस्डैक की रेंज है S2 की, ठीक है। यहाँ गिरती है, आपने 270 पर लगाया, 240 पर स्टॉप लॉस लगाया, वो यहाँ से टच करके वापस चलाई। तो आपको ये भी अकोमोडेट रखना है कि मुझे इस रेंज के अंदर स्टॉप लॉस तो ना लगाऊं ना, रेंज से बाहर स्टॉप लॉस लगाना है। But only if it's too wide, then ये देखें, ये नंबर बहुत वाइड है, ये यहाँ पर आप कह देंगे यहाँ से ले लिया, यहाँ से। तो एरियाज आपको फीलिंग से चलता है। कल 68 से आया था, कल वही जो था ना, लोअर वाला मैंने उसमें से लिया था, and then it stopped, you know, पर काफी देर के बाद, but it did. अच्छा, जतिन का नंबर दे पाएंगे? मैं आपको टेक्स्ट, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको टेक्स्ट कर दूं। व्हाट्सएप वही वाला 0694, तो मैं रिप्लाई कर Sorry. हाँ जी। Rhythmics के help करते हैं। Rhythmics का लाना है इसमें। नहीं, यार निंजा खुलता है इसमें $15 में, वो आपको रिदमिक के साथ नहीं चलाने देते। नहीं, हम देखना चाहते हैं कि वो कितना चलेगी, कितना बाकी है। वो ठीक है, लेकिन आपको रिदमिक की आप खोलेंगे तो निंजा बंद हो जाएगा। वो निंजा बंद हो जाएगा। एक टाइम पे एक चलता है। अच्छा, ये देखिए, मैंने रिदमिक खोला, ये ऐप है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, अब मैं यहाँ करूंगा तो वो कहता है निंजा से डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये सारा आपका बैलेंस यहाँ पर लेजर शो करता है। ठीक है, मैं रिप्लाई करता हूँ। All right, breaking S1 shortly. Rafi, your experience with the trade copier when you mix EAs and PAs. No issues. I copy 20 accounts at a time. Yeah, I can come over and see. You trade. Yeah. My trigger account was using the higher amount. Yeah. Why is that? You see this one? Yeah. This one is below. Didn't have enough threshold. Yeah, so it's got a message that you're. So it does track. It is Liquidated. liquidated, and The other ones were. correct. So you have to make sure they're identical when you're going in. Otherwise, किस चीज का? नहीं, ये बुक मार्क नहीं होता, ये तो ऐप है ना, ये तो yeah. There is still one that is $100 more than everything else. Yeah, That is my trigger account. that was the trigger. जी सर। ये 30 मिनट पे चल रहा है ना, हाँ, ये 30 मिनट पे चला। तो इसी के साथ चल रहा है। नहीं, ये एरिया के चार्ट्स हैं, प्राइस सेम है, लेकिन ये आपको बता देता है मैं किस जोन में खड़ा। यस। अब ये भी आप इस जोन। हाँ जी, ये देखें, ये नैस्डैक और ईएस के जोन खड़े हैं। एग्जैक्टली। You did, no? No? Okay, what is it? What's the June? I think he has to cancel his connect. Cancel. You want to cancel it? I told you. They'll charge him $100 and he's not using it. $100 a month. One or two? So one is standard, which is $75. and then go do one more. Unless you're analyzing hundreds of stocks, there's a service it's called Connect, and then you can, every stock, US, Canadian, you can analyze. So that's, if you want to, let's say, you want to see when is Rogers good time to buy or sell, you can.
Bottom range tested one more time. Where's Connecticut? Okay, I'll give you a number. Call them right now. Yeah, just say I don't no longer or block your credit card. That's if they don't pick up the phone. I actually got a refund. They deducted $4,500. 4,500. Who? Connecticut. 4,500. Yeah. Wow. What did you buy? So remember I was asking you for forex, right? Yes, yes. So I have everything, right? And then I canceled it. Okay. And then after 1 year, they took out $4,500. Oh, wow. That's for four. That's I think you went for annual membership, everything. Yeah. So I said, I'm not even using it. So they took a while, but They refunded? Okay. yeah, please, thank you. No problem, dude. Take care. Guys, it's almost 11:40. 2 o'clock is the FOMC minutes, so there's nothing happening. So the area that I leave you with is S2 for both Nasdaq and ES. So I'm gonna call it as a short day by 12 o'clock, and NVIDIA earnings are at 4:15 or between 4 to 5. So Rafi, you know, the NVIDIA, I want to be up below 100. You would never put a limit order to buy it at $90 or anything? No, I watch things based on these charts. So you can analyze NVIDIA on here too, right? So You should be able to get it just in case I don't think it will go to that $100 ever. Maybe unless because the dip is gone. It went to $89 Amazon. So seeing that people are really holding it, like there's a lot of buyers that are certain. I think this is the only stock that's currently good price. Only problem I have with this, I always have a problem. The $3.5 trillion market cap is too big. So, if this was a trillion, like Tesla is only 1.3, 1.4, right? So, no, that's fine. Even you can do options and other things, but I'm looking for a long term. If this is a company that can do some damage in next 5 years, That's what I'm saying for my sons. Buy 1,000. yeah, that's fine. Even 10 NVIDIAs put in, I know somebody who holds 10, 20, 30, 40. 4 or 5. Yeah, exactly. They keep splitting. Every time it's like with this, and trust me, this in the last 5 years, this is going nuts. Right? Customers, they go close to, I think, $1,600 or $1,300. They split it to one share equal to 20 shares. That's amazing. She went she bought NVIDIA. The last 5 years, how well she did. It's okay. Seriously, it's in my TFS. My TFS is growing just because of NVIDIA. It's NVIDIA. It's the same story with that. No, everybody was panicking about a month and a half ago because things felt crazy, And my dad he's like, all my mutual funds, everything is down. I said, man, it's Trump for you. But he corrected it deliberately in 2 days, right? It was pure luck for my mother. It's okay. Right time, right place, wrong time, wrong place. It's always with stocks, you don't control it, right? So Look, right? Yeah, This is 5-year earning of NVIDIA. I missed it every time, so I'm not a good example. my biggest miss in my life was Visa. When Visa went public, that was the time so many people said, hey, buy Visa. And then just skyrocketed. Took time, 20 years if you hold Visa. Like so. I missed it. That happened in March 18th, 2008.
You said the story that you flew to China and buying it. That was a company called Alibaba. Sorry to bother you, buddy. Did you get it? Yeah, You buy it? Yeah, I bought it. there and we were making lots. I think so. Yeah, yeah. Don't worry. I will check with her. No problem. Bye. Because Visa opened at $15 and it went to $400. So people were saying, sell your kidneys, buy a Visa. I'm like, come on, man. We were young back then. One of my uncles used to tell me that like at that time we were just I was studying and he used to tell me why this is going to be. I say this currency this doesn't make sense, right? And then it went to 5,000. Yes. I remember like हाँ जी जिधर मर्जी सर it was a family dinner and we were just going like a very rough कि discussion. 5,000 कैसे चले. It's okay. Okay. Right. Yeah, yeah, correct. So whatever I'm buying, it's done, okay? Yeah. So now we wait for this. So I will go there, right? I will watch the video and if anything. Yes, absolutely. सर सिर्फ एरियाज हैं बाकी हैं 10 मार्केट्स में पता लग जाता है कि मैंने और कुछ भी नहीं है. देखें 4 इक्विटीज लग गई गोल्ड क्रूड ऑयल फॉरेक्स के सिर्फ वो क्या बना हुआ है. अब ये देखिए ऑलरेडी आपकी कॉपर जो है एक्सपेक्टेड लो की तरफ आ रही है. आई गिरी 2 पॉइंट लिए बाहर आ गए $50 इधर दिखने में एरियाज ही हैं. और अब तो आपको अलर्ट्स आ जाते हैं टेलीग्राम पे. सर आप जाएं सुपर एरियाज पे वहाँ लिखा हुआ जॉइंट प्राइवेट टेलीग्राम वो फॉलो करें. वो क्या करता है अलर्ट्स. अभी 4 मार्केट्स हैं ये जो चल रही हैं. वो 5 पॉइंट पहले यस का बता देगा कि रेडी हो जाओ एरिया आ रहा है बस. तो अगर जिस तरह अभी मैसेज आया था रसल का फोन पे और आप खोलें अपने ऐप वहां से ट्रेड डाल दें. यस इट्स मैं आपको खरीद मैंने करना क्या है. आप नहीं सारा कुछ करना है. नहीं मैंने मुझे बता तो दे पैसे बना के दे. अच्छा इसमें ये है कि मैंने वो आपने लास्ट टाइम अभी मैंने ब्लू नक्स लिया है. एक तो वो करके देना है जो मेरे पास ना कुछ भी नहीं था. नहीं लेजेंड्स है वो खत्म हो पड़ा. और दूसरा जो ट्रेडोविट की ना ऐप से वो क्या बुलनॉक्स में ट्रेडोवेट नहीं है. बुलनॉक्स में रिदमिक चलता है. लेकिन लेजेंड में है ना. लेजेंड्स लेजेंड में भी नहीं था. मैंने होगा लाजमी बात है पीछे. और फिर एक और चीज सर मैंने वो लिया था ट्रेड कॉपी जो था. हाँ वो नहीं इस सवाल नजर आ रहा है मेरे को. मैं चेक कर लेता हूँ. मैंने खेला भी नहीं. 7-8 महीने तो हो गए. ट्रेड का पीर कौन सा बाई किया था कब बाई किया था. अच्छा एपेक्स की वेबसाइट से चलें मैं देखता हूँ. ये दें एनी डेस्क आपको एनी डेस्क चाहिए. अभी मैं फुल जो है ना मूड में हूँ कि मैंने $1 मिलियन बना के निकलना. बाकी एक साल गिव इट अ ईयर. बड़े अकाउंट मैंने लूज किए और मैंने आपका तो आजकल पर्डी और टेक प्रॉफिट डेली पे आउट्स दे रहे हैं. तो बढ़िया ही खेलना चाह रहा हूँ. अभी आप कह रहे हैं मैं सेट करूंगा आपके लिए एक ट्रेड कॉपियर एपेक्स का. जी लेकिन मेरे पास नहीं देख तो चला के गया. हाँ डिस्क अच्छा ये दो 1183 503 1183 हाँ जी एक्सेप्ट करें. यस
तो वैसे आप क्या रिकमेंड करते हैं जो ये है अपना बढ़िया फाइनेंशियल उसका कौन सा अकाउंट एक अकाउंट 3 लाख वाला डायरेक्ट पीए है वो। इंस्टेंट अकाउंट है यस, कितने का वो 750 का चल रहा है, महंगा अकाउंट है। तो उसमें क्वालिफाई 3000 करना होता है 3000 करके 3000 वो आपको दे भी देते हैं। वो माइक्रो भी होगा वैसे। माइक्रो पे करें जिस तरह मिली ये है आप तो सारी- इसमें लॉग इन करें अपने अकाउंट पे। See, I made this so you can know which area it's done. You can up, you know, down. S1, R1 done, S1 done. Okay. So this was R1, right? ये सच्ची में मुझे याद नहीं है ये Price went to 43. इफेक्ट्स का कह रहे हैं एपेक्स ट्रेड कॉपियर आप कह रहे हैं, मैं 7 माह पहले खरीदा था। याद है So now we wait for इसको फॉरगॉट पासवर्ड कर लेना। मैं एक और ट्राई मारता हूँ This is the roof. कि मेरे मतलब कि Roof. Floor. Remember the building? ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। Okay, sir. ओके ठीक है, Super. आ गया जी। बड़ी बात है कुछ याद है मुझे आपका मेंबर है, ठीक है, डाउनलोड। Okay. But let's go to that. 25,000. For you, Lincoln. That's not cheap. Is he on टेक प्रॉफिट कैसा था जी अच्छी कंपनी। हाँ पैसे वाले देते वो एपेक्स की तरह तो नहीं है वो जो मुकर ही गए थे $2,000 बना हुआ लेजेंड्स में और इसमें ब्लू डैक्स एक जैसी है हाँ, लेजेंड्स और बुलनॉक्स और एपेक्स एक जैसे। एपेक्स की कॉपी है बुलनॉक्स। अच्छा तो लेजेंड बेटर है इनसे नहीं, लेजेंड डिफरेंट है, उसके रूल्स डिफरेंट। एपेक्स ये $15 का लगा हुआ है, इट्स ओके। तो अच्छा तो इसमें पास करने 3000 बनाने, तो मिनिमम डेज कुछ नहीं एक दिन में करते हैं मशीन। ओ तो न्यूज आवर में खेलने देते हैं क्वालिफाई करने के लिए बंदा लगा दे 2 लेके अप एंड डाउन ठीक है You really okay? सर जी तो बाट वगैरह का चक्कर खत्म हो गया कोई नहीं बहुत लीगल नहीं है ना वो, हर कंपनी आपको बैन कर देती है। आप कुछ भी बनाएंगे तो वो कहती है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है तो बंद कर देंगे। ऑटोमेशन तो चाहता ही नहीं हो। अच्छा नो प्रॉब्लम। ये S1 और S2
पेमेंट पॉइंट से नीचे आ रही है। हाँ हाँ मैं वेट कर रहा हूँ S2 का। पेमेंट पॉइंट से नीचे। नहीं सर ये तो आपका हो गया है। एपेक्स कॉपियर तो रीइंस्टॉल कर दिए। तो इस पे वो अगर मैं ब्लू नट्स की ज्यादा लेता हूँ अकाउंट 4-5-6 हाँ हाँ जितने सारे मर्जी कोई मसला नहीं है ना, इसमें एपेक्स चले मैक्सिमम आप ले सकते हैं 11। इसमें बोला ये फॉर्म भर दें। यहाँ पे ये फॉर्म भर दें। पासवर्ड चुनना अभी नहीं है। अभी आपने पासवर्ड पिक करना है जी। ये सारे फायरवर्क्स चलेंगे 2 बजे। उस वक्त जरा थोड़ी सी देख लेंगे कि किस साइड पे है। 2 भी FOMC की मिनट्स हैं जी। उन्होंने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना है कि किधर जाना है। ये ट्रम्प वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट है तो वो नहीं चाहता कि वो चाहता इंटरेस्ट रेट गिरे, ये नहीं चाहते। सो दैट्स हाउ टाइम विल। ये दूसरी ईमेल डाल दूंगा। ये तो आपके पास है रेडी। हाउ टू देखें फ्लो बॉट खुलता है ना, ऊपर 3 चीजें चेक करनी है। इंस्ट्रूमेंट वो लिखा होता है MES ES NASDAQ ES, ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। उससे नीचे आता है लीडर 1 2 3 4, ये आपको अकाउंट नंबर पिक करें। ठीक है, लेट्स से आपके पास लेजेंड है, इमेजिन करें टेक प्रॉफिट है, 3 अकाउंट है, एक अकाउंट लीडर हो जाएगा, बस दैट्स इट। अब राइट साइड पे वो कहता है फॉलो किस किस को करूं, तो आप उनको चेक कर देते हैं कि जो भी काम मैं लीडर में करूं फॉलोअर 2 3 5 हो जाए। ये हो गया। अब आप विंडो खोलेंगे ट्रेड में, चार्ट ट्रेडर हो डॉम हो जैसे भी, तो जो भी काम उस इंस्ट्रूमेंट में और उस लीडर में करेंगे ना वो फॉलोअर खुद ही करता है। यस, तो आपको 5 नहीं पास करने, एक ही करना है, वो 5 खुद ही हो जाते हैं। मीनिंग के लेकिन आपका एक गलती आई तो 5 की गलती आएगी, राइट। सो हाँ हाँ ठीक है। ये सिर्फ देख लीजिएगा पेमेंट $15 जाए ना चलेगी। मैंने बाय कर लिया। नहीं वेट करें, अभी वो कह रहा है आपने लॉगिन नहीं किया, यहाँ लॉगिन करें। आपके पास इसका अकाउंट है बुलनॉक्स का? ठीक है, लॉगिन करें। एक तो अभी चल रहा है ना इसका। गुड, तो आपका अकाउंट ये मैंने बहुत पहले से जैसे नहीं उधर किया। ये तो ठीक है ना, इसी को लेके चलते हैं। और वही कह रहा ना कि भूल गया था पासवर्ड। ओके, आपका सब कुछ ठीक है मेरा ख्याल है। अच्छा, ये सर अटैच की उसके साथ नहीं, रिदमिक भी है आपके पास। हाँ, रिदमिक तो मेरे पास है। ये बहुत एपेक्स यूज करें। ये एपेक्स बहुत मुश्किल हो गया, उसकी कंडीशन बहुत सख्त कर दी उन्होंने। क्योंकि एक ट्रेड में से वो कहते हैं एक ट्रेड के अंदर भी लॉस ना हो। अब जैसे आपने एक ट्रेड डाला एपेक्स में और आपके पास 450 का 30%, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। दे आर मेकिंग इट वेरी स्ट्रिक्ट। इस वजह से कम ही लोग अब ज्यादा बुलनॉक्स की तरफ आ गए या टेक प्रॉफिट की तरफ। टेक प्रॉफिट की सेल भी सुबह बुलनॉक्स ही और की कोई।
Sir, one more time. Okay, so open flow bar. Yeah, okay. On top, it will say instrument. Yes. At the bottom, it will say a leader. लीडर होगा ना, कोई अकाउंट एक से एक अकाउंट है तो कोई ना कोई तो आपको सेलेक्ट करना है ना. Didn't see anything. नहीं, आप किसी कनेक्टेड हैं कनेक्शंस में, पहले किसी अकाउंट को तो कनेक्ट करें ना. तो टेक प्रॉफिट आपका जो सिलेक्टेड था. नहीं वो ठीक है, लेकिन आप उसको राइट क्लिक करें, वो रिमोट मोड खत्म कर दें, क्योंकि अभी आप उसमें एनबीटी प्रोग्राम में होंगे, उसको बंद कर दें. Okay. अच्छा ये भी चेक करो किसको बना दें. तो आपका तो 100% सेटअप है. रिथमिक का भी मैं कर रहा हूँ, उसकी ट्रेडो बिट नहीं था मेरे पास. हाँ जी, मैं लेजेंड किया ना. हाँ, ये रिदमिक में चलता है. अगर फोन पे भी करना है तो रिदमिक की ऐप होगी. फोन पे भी हो रहा है. फोन पे भी. जो एरिया का अलर्ट आ जाए ना, अच्छा है. बंदा ऑर्डर डाल, फोन पे ऑर्डर भी डाल जाता है. नहीं ऑर्डर तो यार ना ना करो यार. So we did leader account. हाँ, उसके बाद अब उथे हुन इंस्ट्रूमेंट फॉलोअर, अब राइट साइड पे जिसको फॉलो करना है ना, उनको ग्रीन कर दें. अब ट्रेड डालें लीडर में बस. सो टेस्ट MAS में कीजिएगा या MNQ पे, फुल में ना कर लीजिएगा, क्योंकि एक गया तो वो सारे ही जाएंगे. इंस्ट्रूमेंट जो आपने ट्रेड करना है ना, ES ट्रेड करना है, MES करना है, MNQ करना है, NQ, तो जो भी लीडर और इंस्ट्रूमेंट रखना है, और दूसरी साइड पे मैं इसके पांच लगाता हूँ ब्लू नट. तो 3000 डालो पूरा करना, तो 5 भी करे बंदा. नहीं हर एक को 3000 करना पड़ेगा. हाँ काफी रुपये लग गया तो यस एक ही मेहनत करनी पड़ी. अभी तो एक ही रहने दो ना. अभी तो है थोड़ी देर. हाँ, आज फोन चला लूंगा ना. ये बड़े अरसे बाद आपको देखा ऑलमोस्ट. बहुत अच्छा हो गया, पिछले नवंबर से भी नहीं कर. फिर कल आए और डैनियल को मिल तो जाते हैं वो. हाँ ठीक है. नहीं ये सॉफ्टवेयर आपका अपडेट होने वाला है, काफी पुराना है. 4 रिलीजेस आ चुकी हैं इस दौरान. नहीं अभी तो मैंने थोड़ा सा अपडेट किया था. पूछूं उनसे. अभी तो वो चले गए हैं. सर ये मेथड जो रेशियो लिखा हुआ है इसमें कुछ तो वो नहीं है ना. नहीं वो कुछ नहीं. हाँ वो रेशियो ही रहने दें या बंद. अभी लेजेंड तो नहीं चल रहा ना. लेजेंड नहीं, उसका अकाउंट खत्म हुआ है, लेकिन बाय करूंगा. ठीक है, मैं अभी सेट कर देता हूँ, 1 मिनट में शायद सही हो. बस वो रिथमिक हो जाए ना कभी, सॉरी ट्रेडो भी हो जाए ना कभी, बंद नहीं होता. क्या आपने टेक प्रॉफिट कलेक्ट करना है किससे? कोई मतलब सिम कर, सिम सेलेक्ट किया किसी ने. टेक प्रॉफिट यहाँ क्या है? टेक प्रॉफिट कर. ओके डालें. ठीक है. आगे अब इसमें अगर मैं 100 करेंगे तो ठीक है. इनको लीडर मैंने जैसे मैं सब ये रिथमिक ऑन करता हूँ, वो फिर बढ़िया को ऑफ कर देता है या क्या चीज? रिथमिक को अगर मैं नहीं रिदमिक एक अलाउ होता है, रिदमिक मल्टी अलाउड नहीं है. तो मीनिंग एक लेकिन वो किक नहीं करता आउट, किसी और को किक नहीं करता आउट. अब नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने एपेक्स खोला है रिदमिक का और बुलनॉक्स भी रिदमिक का खोला है, फिर एक रिदमिक अलाउ करता है, या एपेक्स का करेगा या बुलनॉक्स का. लेकिन अगर पर्डिया साथ है तो पर्डिया तो चलता रहता है. पर्डिया साथ आप खोल सकते हैं. मेरी हमेशा ये रेकमेंड होती है एक फंडेड कंपनी को एक वक्त में चलाएं.
आप जब कनेक्ट करते थे कई दफ़ा डेटा के कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो अगर आपने टेक प्रॉफिट करना है तो उसको ऑन कर दें, उसको ऑफ कर दें, उसको तो जितने मर्जी कनेक्शन डाल दें। लो सर, ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट रेडी है, सब कुछ रेडी है, 100% गुड टू कम। डन हो गया सर? डन हो गया। हाँ ले। फॉर एग्जांपल मैंने ये खोला ना, हाँ रिदमिक का, ये अच्छा सॉरी, रिदमिक खोलेंगे निंजा बंद हो जाएगा, निंजा खोलेंगे रिदमिक बंद हो जाएगा, ये नॉर्मल है। अच्छा आप रिदमिक की ऐप खोलते हैं, निंजा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, निंजा को कनेक्ट करते हैं रिदमिक से। ये ट्रेडो वेट की तरह नहीं है, क्योंकि वो $15 में आपको 2 लॉगिन नहीं दे रहे। ट्रेडो वेट आपको क्योंकि $50 का देता है, तो वो आपको 2 लॉगिन दे देता है कि आप ब्राउजर पे भी लॉगिन कर जाएं, इधर भी कर दें। रिदमिक कहता है नहीं, या इधर अगर आप $35 उनको और दें तो वो फिर आपको खोल देते हैं 2 कनेक्शन। तो इट्स तो अगर आपने क्विकली कोई बंद करना, निंजा क्रैश हुआ तो रिदमिक खोलते खोलते आप या रिदमिक खुला रहेगा या वो, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इशू है। तो अपने थ्रेशोल्ड खोलना है तो इधर से निंजा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, मुझे लगा आपने 2 एपेक्स के अकाउंट खोलने हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। वो कल ही मैंने लिए। तो सर ये जो दिया फाइनेंशियल है, हाँ जी इसमें आपको कुछ पर डे का भी है? सर, कुछ नहीं है, वो कहते हैं जो मर्जी करो, हमें 750 दे दो और आपको 3000 का टारगेट दे देते हैं हम। That's it. इसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है कि पर डे में इतने मास बनाने नहीं नहीं नहीं, वो है रिस्ट्रिक्शन, 10 दिन ट्रेड करना है और 5 दिन ऐसे हों जो 200 वाले हों। 200 से ऊपर। अच्छा अच्छा सर, आप कौन कौन से एरिया रह गया? सर अभी तो S2 रहता है बकायदा, S1 हुआ है पूरा 100% वैलिड हुआ, मैंने नहीं लिया, लेकिन अभी S2 रहता है। और 2 बजे जैसे जैसे आ रहे हैं फिर पता लगे या एक्सपेक्टेड हाई पे खड़ी हो या एक्सपेक्टेड लो पे, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ है। 2 बजे FOMC के मिनट्स हैं जी, तो यानी कि और टाइम पे रिलीज तो नहीं पूरे टाइम पे, ये 2 बजे। हाँ मेरी ये मिनट्स हैं, वो आके बताएंगे कि हम हाँ मार्केट का, क्योंकि अंदर खाते जो इनकी डील हुई है कि हमने ये करना है, वो उसने आके सिर्फ पढ़ना है, उसका कोई कमाल नहीं होता। ये हमें सारे आगे पपेट टोपी ड्रामा लगा हुआ है, वो आके बोल देगा भाई ऐसे है, वो सारी अंदर डील हो चुकी है, राइट। हमें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए शो पीस आना है, उसने सेट कर देना है कि यार हम इंटरेस्ट रेट दिसंबर तक नहीं बढ़ा रहे, या इकोनॉमी अच्छी लगती है, ठीक है यार हम कहते हैं सितंबर, क्योंकि अगला रेट की अनाउंसमेंट है जून 18 को। तो ट्रम्प चाहता है रेट गिरा दें, ये नहीं चाहता, तो इसने भी खेलना है। इन्फ्लेशन के साथ है ना, तो एक गुड कॉप बना हुआ है, एक बैड कॉप, और दोनों मार्केट का ना सही चूस रहे हैं। तो हमने उनकी तरफ जाना है जहाँ मार्केट जा रही हो, और हमारा एरिया अगर कहता है कि यहाँ से बाउंस होनी चाहिए, तो नूरा कुश्ती हो रही है स्टॉक मार्केट में। टैग टीम है, वो कहता है ठीक कर लो, एक दिन वो अगर, अब तो इतना बुरा हाल है वो कह के लिख देता है कि बाय कर लो। अब मैं हाँ वो लिख देता है, 3 दफा उसने ये कहा है सर, उसने मुंह से बोला 15 मिनट पहले सुबह 10 बजे कह दिया, और उसके बाद उसने कहा इट्स ए ग्रेट टाइम टू बाय टेस्ला,
That's it. Tesla stock कहाँ से कहाँ चला जाता है, right? So that is all there is. ऐसे ऐसे पागल बंदे दुनिया में बैठ गए सर पैसा बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं. हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें सॉफ्टवेयर बता देता है. वो सही पैसा. और आज शाम को जो होना है एनवीडिया के साथ, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है यार, कोई मजाक नहीं है ना. अब उन्होंने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स देने हैं, तो किसी ने तो रातों रात अमीर हो जाना है. मिसाल जैसे आपने $50,000 एनवीडिया में डाले हों और 500 शेयर ले लें और वो 135 का चला जाए 170 पे, $35 पर शेयर बढ़ जाए, तो आप देखिए ना 35 टाइम्स 500, आपके तो 17,000 चिपक गए ना एक झटके में. तो लेकिन सेम टाइम वो 100 पे आ गया तो आपके तो 17,000 चले गए. तो एक इसमें विनर होगा, एक लूजर होगा. तो देयर इज नो हेजिंग भी कर सकते हैं इसमें. तो हेजिंग भी नहीं कर सकते. सही, इसमें एक ही करना है, एक ही डायरेक्शन में. सर जी वैसे ब्लू नॉक्स में हेजिंग हो सकती है? नहीं, नो हेजिंग. सिर्फ एपेक्स अलाउ करता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, नथिंग एल्स. लेकिन एपेक्स के बाद में कुछ Apex stuff. All right, I'm gonna shut it down. See you guys. Okay, sir. So just watch out for news, watch out for Nvidia earnings. S2 is what is available, and of course R2. S2 R2. Borderline पे बैठेंगे जब explosion होगा.